people, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a very important 10 questions on TS Eliot, and these questions should be known to you if you are going to prepare for any exam, whether it is PhD or other exams. Suppose these questions are asked for the upcoming UGC NET in literature or other exams. So I think this video will very helpful for you, and if you did not subscribe my channel, please like and subscribe my channel and share your friends and other students who are going to prepare for UGC NET in literature. So let us start the video. The first question is, who is the unifying link in wasteland? The first option is Kingfisher, second one is Oedipus King, the third is Tiresias and the fourth is King Arthur. तो आई थिंक कि आपको इसका आंसर पता होगा. अगर इसका आंसर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज किंग फिशर. तो अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन है, टी.एस. एलियट हैज़ बोरोड द मिथिकल सोर्स इन द फैमिली रीयूनियन फ्रॉम. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एस्काइलस, सेकंड वन इज सोफोक्लिस, थर्ड इज प्लेटो एंड द फोर्थ इज हेरोडोटस. आपको आंसर पता है? चलिए कोई नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. The answer is first, Aeschylus. Aeschylus is the right answer of this question. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. The third question is, which Aleutian character utters the question, do I eat a peach? The first option is Marina, second one is Prufrock, third is Sweeney and the fourth one is Stetson. सो यू नो द आंसर. अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको आंसर आ रहा होगा. चलिए मैं बता देती हूँ आपको. द करेक्ट आंसर इज प्रूफ्रोक, मीन्स द बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे? द फोर्थ क्वेश्चन इज, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसफी इज सीन इन द राइटिंग्स ऑफ. The first is G.B. Shaw, second one is Neil Coward, fourth one is Thomas Stoppard and the fourth one is T.S. Eliot. I think आपको इसका आंसर आ गया होगा. So the correct answer of this question is T.S. Eliot. देखते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है. तो ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, Who coined the phrase objective correlative? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टी.एस. एलियट, सेकेंड वन इज अर्नोल्ड, थर्ड इज आई. रिचर्ड्स एंड द फोर्थ इज जॉनसन. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी.एस. एलियट. अब देखते हैं कि हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आज का कौन सा है. सो the sixth question is, the wasteland is dedicated to whom? The first is R.W. Emerson, second is Walt Whitman, fourth is Ezra Pound and the fourth is Ernest Hemingway. So what is the right answer of this question? So the right answer of this question is Ezra Pound. देखते हैं अब इसका सेवेंथ क्वेश्चन क्या है. The next question is, which of the following characters from Eliot's Wasteland is not correctly mentioned? The first option is the typist, second one is Madame Sosostris, third is the merchant of Diogenes and the fourth is the young man Carbuncular. So I think you have the knowledge of this question. So if you do not know the answer, I will tell you the answer of this question, and the answer is the merchant from Diogenes. And the next question is, who said honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet
but upon the poetry. The first option is Northrop Frye, second is W.B. Yeats, third is T.S. Eliot, and the fourth is I.A. Richards. So the correct answer is T.S. Eliot. T.S. Eliot said that honest criticism and sensitive appreciation is directly not upon the poet but upon the poetry. So आप देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. So this is the ninth question of this series and the question is T.S. Eliot's The Family Reunion deals with. The first option is forgive and forgot. Second is crime, remorse and purification. Third is crime and revenge. And the fourth is love and hatred. So अगर आपने फैमिली रियूनियन पढ़ा होगा तो यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज क्राइम, रिमोर्स एंड प्यूरिफिकेशन. तो अब देखते हैं आज की इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर इज 10th. The 10th number question is T.S. Eliot propounds his impersonal theory of poetry in the essay. The first is Hamlet and his problem. Second is tradition and the individual talent. Third is the function of criticism. And the fourth is the perfect critic. I think you have know the answer of this question. So the right answer of this question is tradition and the individual talent. तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे थे, अगर 10th में आप 8 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि आपको अभी और अच्छे से टी.एस. एलियट को पढ़ने की ज़रूरत है. बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स. तो आप इसको प्लीज़ सीरियसली पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू so much for watching this video.